Good morning, students. Today we are going to start a new chapter in Maths 2, chapter number 7, that is coordinate geometry. Students, you have done in your lower standards about the graph. You have drawn the graph. You heard the name as x-axis, y-axis. I think you have drawn the points also. Okay. Today some new thing we have to understand. Okay. What is the new thing here? All of you know a horizontal line. Your horizontal line is called as in which axis? X-axis. And a vertical line is called as in y-axis. Understand? No? A horizontal line is called as which axis? X-axis. And the vertical line is called as a y-axis. When both the x-axis and y-axis meet at one point, that we name as what? 0. They meet at 0. That is called as an origin. Okay? Okay. Now, this x-axis and y-axis, this x-axis is divided into two parts. One is a positive number, one is what? Negative number. The numbers on the right hand side of x-axis are called as in positive numbers. So here 1, this is 2, this is 3, and this is 4, and so on. These are called positive numbers. On the left hand side of x-axis, there are which numbers? Negative numbers. -1, -2, -3, -4, and so on. Okay. On the y-axis, the above numbers are always positive. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And the below numbers are negative numbers. That is -1, -2, -3, -4, and -5, and so on. Okay. Now this x-axis and y-axis are divided into 4 parts. I can say 4 quadrants. What is that? 4 quadrants. This is called first quadrant. This is called second quadrant. And this is called third quadrant, and this is called fourth quadrant. This is second quadrant, and this is third quadrant, and this is your fourth quadrant. So x-axis and y-axis are divided into 4 quadrants: first, second, third, fourth. A quadrant, okay, in this first quadrant, both x coordinate and y coordinate will be how much? It will be positive. See here, a point has 2 coordinates. Which coordinate? X coordinate and y coordinate. In the first coordinate, the point will be, both will be positive. See here, x coordinates are what? Positive. Y coordinates also positive. Okay. In the second quadrant, the point has, in the second quadrant, the point has, x coordinate has what? Negative numbers, and y coordinate has positive numbers. In the third quadrant, a point has negative numbers, x has negative numbers, y has negative numbers, negative and negative. Okay. In the fourth quadrant, the point x coordinate will be what? Positive, and y coordinate will be what? Negative. Once again I'll tell you, in the first quadrant, both the x coordinate as well as y coordinate will be positive. In the second quadrant, the x coordinate will be what? Negative, and the y coordinate will be what? Positive. In the third quadrant, the x coordinate will be what? Negative, and the y coordinate is also negative. In the fourth quadrant, the x coordinate will be positive and the y coordinate will be what? Negative. Apart from this, if the point is here, we can understand. If the point is on the axis, so x-axis or y-axis, if the point is there on the x-axis, what is the x value here? X coordinate 3, y coordinate will be how much? 0. So whenever the point is on the axis, one of the coordinate will be what? 0. Understand, student? Once again I'm saying, if the point is on the axis, it can be x-axis and y-axis, anyone. If it is on the x-axis, the y coordinate will be what? 0. If the point is on the y-axis, the x coordinate will be 0. समझा मैंने क्या बोला है बॉस? अगर पॉइंट x-axis पे रहता है तो y coordinate क्या होगा? 0 होगा. फॉर एग्जांपल हियर देखो, x coordinate कितना है? 3, y coordinate क्या होगा? 0. ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव. द पॉइंट इज हियर, इट कैन बी.
सो व्हेनेवर एक्स एक्सिस रहेगा तो आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। 0 रहेगा तो हमेशा याद कोऑर्डिनेट कभी नहीं आता है। 0 दिखा है ना, आपको समझना है कि भाई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है। इधर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब क्या, आपका आंसर क्या आता है, एक्स एक्सिस है। तभी प्लस माइनस मत देखो, तभी क्या देखने का, अगर 0 रहेगा तो 0 रहेगा तो हमेशा क्या दिखने का, अरे एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में क्या होता है, योर एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, वाई कोऑर्डिनेट कैन बी एनीथिंग। ओरिजिन में क्या होता है, दोनों भी कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0 0 होता है। ओके, अंडरस्टैंड। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, दोनों भी कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, प्लस प्लस होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, दोनों भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस होता है। ओके, और एक्स एक्सिस कभी भी 0 आएगा। 0 आएगा तो गलती से भी क्वाड्रेंट नहीं बोलना है। 0 आएगा भले एक्स हो या वाई हो, अगर 0 दिखा तो अपन क्या बोलने का, एक्सिस बोलने का। ओके, अगर y में 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो आंसर क्या आएगा, x एक्सिस है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो आंसर क्या आएगा, y एक्सिस आएगा। कभी भी 0 आएगा तो गलती से कोऑर्डिनेट लिखे तो सीधा 0 मिलेगा। अगर 0 दिखा तो आपको क्या लिखना है, एक्सिस लिखने का। कौन सा एक्सिस लिखना है वो आपको मालूम है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा तो क्या लिखने का, x एक्सिस लिखने का, और x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा तो क्या लिखने का, y एक्सिस लिखने का। अगर दोनों भी 0 है तो क्या लिखना है, ओरिजिन लिखना है। समझा इतना, प्लीज प्रॉपरली देखो, ये इस पे पूरा अपना चैप्टर डिपेंड है। किसी को कोई डाउट है, नहीं? ओके, चलो अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 7.1 करते हैं।